तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दो तरह के लीव्स, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे चैम्बर्स, चैम्बर्स के अंदर क्या बना, पॉलन्स बने। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल पे क्या बना, ओव्यूल, राइट। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे क्या हुआ, ये ओव्यूल, ओव्यूल की ओपनिंग को क्या बोला गया, माइक्रोपाइल। जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल में सिंगल कवरिंग है, नाम क्या दिया, यूनिटेगमिक, सिंगल इंटीग्यूमेंट यूनिटेगमिक। Inside the ovule, female sex organs develop. The female sex organs are known as archegonium. Female sex organs, the archegonium. Inside the archegonium, there is a female gamete. There is a female gamete. Right. At the micropylar end, at this micropyle, the ovule secretes mucilage drop. यहाँ पे mucilage की drop बन जाती है. This mucilage drop is known as the pollen drop. इसे हम क्या बोलते हैं? This is known as the pollen drop. ठीक है? This pollen drop traps the pollens. The pollen drop traps the pollen. Now, when a pollen enters or is placed over here, जब एक pollen grain यहाँ पे आता है, ये आ गया, let us suppose pollen. Transfer of pollen to the ovule, in this case, is known as pollination. In this case, it is known as pollination. This occurs by wind. It occurs by wind. Pollination occurs by wind, right? Pollen may produce a pollen tube. Pollen may produce a pollen tube, or may release the male gamete. Pollen जो है वो मेल reproductive system का part, is related to the male sex organ. It may release the male gametes. Pollen के अंदर क्या होते हैं, male gametes होते हैं. Release the male gametes here. या तो pollen tube बनाए और या फिर male gametes को यहाँ पर रिलीज कर दे. यहाँ पे the pollen drop यहाँ पे रिलीज हो जाएगा. अब इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे और उनको क्या क्या कंडीशंस बोलते हैं वो डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पेज. Now let us suppose this is the opening we are talking about, the micropyle. Let us just focus upon this opening. That's it. This is the pollen drop. And below this is the fertile part of the ovule, जहां पे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है. ये आर्किगोनिया है. ठीक है.
अच्छा, ये बना पॉलन ट्यूब, ये पॉलन और इससे ये निकलने वाली एक ट्यूब, या तो ये ट्यूब बनाता है, दिस इज द पॉलन ट्यूब। If fertilization, if fertilization is with the help of, is with the help of pollen tube, अगर pollen tube से मेल गेमीट्स कैरी कर किए जा रहे होते हैं, the fertilization is with the help of pollen tube, or you can say the pollen tube carries the male gametes. Pollen tube carries the male gametes. The type of fertilization, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम साइफोनोगेमी कहते हैं। The type of fertilization is siphonogamy. Siphon itself means a tube. Siphonogamy. Siphonogamy. Right? This is siphonogamy. Siphonogamy is common. Siphonogamy occurs in angiosperms as well, flowering plants. एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन से हमेशा पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ट्यूब मेल गेमीट्स को लेकर जाती है, राइट। द अदर केसेस लेट दिस बी द पॉलन। अब हम एक दूसरा केस बना रहे हैं। आई एम डिवाइडिंग दिस डायग्राम इनटू टू हाफ्स, एक जिसमें हम साइफोनोगेमी शो करने की कोशिश करेंगे और दूसरे में दूसरा मैकेनिज्म। अब यहां से क्या हुआ, यहां से pollen grain रिलीज हो गया and the pollen grain now swims into this fluid to reach the archegonia. Now from here the male gamete travels by itself. In this case no pollen tube, the male gametes swim or travel by themselves, towards archegonia. Such kind of fertilization is known as zooidogamy. Zooidogamy. In this case, the fertilization is known as zoo means animal like. Zooidogamy. ठीक है, एक हो गया साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी fertilization with the help of the pollen tube, and zoogamy when the pollen grain releases the male gamete and male gamete travel by themselves, खुद से मूव करते हैं। ठीक है, this is about fertilization. Next page. The ovule becomes the seed. Ovule becomes the seed.
inside the seed or inside ovule, even before फर्टिलाइजेशन से पहले रिजर्व फूड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन से पहले रिजर्व फूड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन रिजर्व फूड begins to accumulate. This is the reserve food for, this is reserve for embryo, and is called endosperm, and is called endosperm. Endosperm is hence a pre-fertilization product, fertilization से पहले बना, pre-fertilization product, and all the cells are haploid. So endosperm is haploid. Now if I compare it with the endosperm of the angiosperms, angiosperms में ओव्यूल कुछ इस तरह का होता है। It's like this. It has two coverings. There are two coverings. Inside this, a haploid structure, embryo sac is formed. स्ट्रक्चर बनता है ओव्यूल के अंदर जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड. एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड. इस एम्ब्रियो सैक में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आने वाले मेल गैमीट के साथ फ्यूज करते हैं. यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब आई, and the pollen tube would enter the ovule. अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइफोनोगेमी होती है. ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द pollen tube. दिस इज द pollen tube. ये क्या है? दिस इज द pollen tube. ठीक है. इसके अंदर आगे की तरफ दो मेल गैमीट्स हैं. इसके अंदर आगे की तरफ दो मेल गैमीट्स हैं. ठीक है. वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग. यहाँ पे एग है, द फीमेल गैमीट. दिस इज द फीमेल गैमीट, and these are the male gametes. The pollen tube carries the male gametes, hence siphonogamy. One male gamete fuses with the female gamete to form the embryo. To form the embryo. However, the second male gamete fuses with two polar nuclei.
ये जो बीच में जो रेड रेड हमने बना दिए, इन्हें क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। These two are the polar nuclei. Each polar nuclei is haploid. अब आप एज सच देखो, दो पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हैप्लॉइड, और एक मेल गमीट जो खुद भी हैप्लॉइड है, तो इट्स n+n। जिम्नोस्पर्म्स का ओव्यूल, सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म, ये कैसा है? हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म is a pre-fertilization product and is haploid, whereas the angiospermic endosperm, in this case the endosperm would be triploid। ये 3n हो जाएगा, दिख रहा है नीचे? n+n, ये कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड। ठीक है। एंजियोस्पर्म्स Yes, का sir. एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, क्योंकि देखो मेल गमीट आया है यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बना, और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले। इसका नेचर कैसा रह जाता है? हैप्लॉइड। यहाँ पे नेचर कैसा हो जाता है? ट्रिप्लॉइड। 3n हो जाता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले बना और हैप्लॉइड है, एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन के बाद बना और ट्रिप्लॉइड है। नेक्स्ट पेज। ये समझ में आ रहा है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? Yes, sir. सो जिम्नोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म इज प्री फर्टिलाइजेशन, थ्योरी के फॉर्म में लिख देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट and is haploid, whereas in the case of angiosperms, the endosperm is post fertilization product, fertilization के बाद बनेगा, post fertilization product formed by triple fusion, that is n the male gamete, plus the other n, which are 2, n plus n. These two are the polar nuclei. This fusion is known as triple fusion. This is triple fusion, and this is fertilization. एंजियोस्पर्म्स में अभी तक जो पढ़ा हमने, उसके हिसाब से अगर आप देखो, एंजियोस्पर्म्स दे हैव डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंडोस्पर्म बनने के टाइम पे फर्टिलाइजेशन तो इन्वॉल्व होता नहीं है। इन दिस केस दे हैव डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से? एक मेल गमीट प्लस फीमेल गमीट, these are the gametes,
इसे हम क्या बोलते हैं? सिनगेमी, फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स। ये बताया था ना, वन मेल गेमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गेमीट, this with this, then the second is this one, the male gamete plus n plus n, which is triple fusion. Gymnosperms single fertilization, angiosperms double fertilization. Double fertilization and triple fusion are characteristic of angiosperms. Double fertilization and triple fusion, these are found in double fertilization and triple fusion are found in angiosperms.